कि इस ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं वी आर ऑल सिनेमा बफ्स और मैं रेडियो पर एक लाइन हमेशा कहता हूं कि मैंने जिंदगी में जो भी सीखा है माँ और सिनेमा से सीखा है. तो बॉलीवुड has played a very important role in all our lives. The topic of discussion, we're going to make it very lively, interactive, and we'll go with the flow on this one. But I'd like to start off with a small story because that's what every gathering is all about. कुछ कहानियां. The story is about a little boy क्योंकि मैं 90s की पैदाइश हूँ. हमारे टाइम पे क्या होता था कि स्कूल टाइम we were told कि अच्छी पढ़ाई करो, then you will get to go to a movie hall and enjoy a movie with your family and your friends. और हम इंतजार करते थे कि कब हम सिनेमा हॉल जाएंगे, ब्लैक में टिकट खरीदेंगे. दोज वर डेज व्हेन देयर वाज नो ऑनलाइन बुकिंग, सो वी डिड नॉट इवन नो कि हमें जाकर वो टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी. बट देन वॉचिंग दैट स्टार, चाहे वो सनी देओल हो या सलमान खान एंड हम आपके कौन, और इवन मूवीज लाइक राजा हिंदुस्तानी वेयर दे हैड अ लेंथी किस सीन, लेकिन कोई पॉज और फास्ट फॉरवर्ड करने वाला बंदा था नहीं, तो अंधेरे में हम आराम से देख सकते इवन विद आवर पेरेंट्स वाचिंग अस. सो आई फील अ लिटिल सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग द ओटीटी, क्योंकि वहां पर आपको पहले से ही डिस्क्लेमर मिल जाता है कि ये है, वो है, फलाना है, दिस इज नॉट फॉर दिस एज एंड दैट एज. बट दैट्स द फन ऑफ वाचिंग अ मूवी. आप अपने डीपेस्ट पर्सनल मोमेंट्स किसी के साथ शेयर करते हो. जब आपका फेवरेट किरदार होता है तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं. इट्स लाइक इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल इनसाइड अ मूवी हॉल और 100 पीपल इनसाइड अ मूवी हॉल, आपके डीपेस्ट इमोशंस डोंट रिमेन पर्सनल एनीमोर. You're sharing what you feel about that movie and that story जो आप देख रहे हो. Yes, मैं उस जनरेशन को भी बिलोंग करता हूं जो घर पे बैठ के अपने पैजामास में, अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में एकदम आराम से जब पॉज किया तो पॉज किया, जब देखना हो तो देख लिया. Oh, I have so many options to watch. Movies, English, Hindi, Spanish, independent, theater, short films, whatever I need to watch. ये जो choice है, now this works both ways. And I'd like to start by opening up the discussion on a very lively note. The way I see this, it's like आपका जो OTT, सब्सक्राइबर है, वो चाहे नेटफ्लिक्स हो या डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और सोनी लिव, वो आपका प्यार है, आपकी महबूबा है, and it's craving for your attention. And then you have your old girlfriend also you love, that's the cinema hall, and that is also craving for your attention. Now you're in a very good position to choose कि आपको किसका प्यार चूज करना है. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the, lovely two gentlemen to my right. और शुरुआत तो सर मैं एक बड़े लाइट सवाल के साथ करना चाहूंगा, and to both of you. So I was talking to Rachna ji yesterday, and we were having dinner, and then she said, Arvind, you need to ask Rajat this question on the session tomorrow. She was, in his college. Said his room was filled with, movies all the time. He was that one guy हमारे college में who used to eat, live and breathe movies, and literally. So no wonder he's an actor and a filmmaker right now, क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता था. So to both Rajat, I'm not sure about that, but रचना जी on record अगर आप देख रही हैं. Not much has changed by the way. So to both of you मैं एक बहुत innocent सवाल करूँगा. It's very hard to remember the first time आप एक movie hall गए, लेकिन I narrated something from the 90s. That's my movie hall memory. आपने जो फर्स्ट मूवी हॉल का जो सिनेमा देखा होगा, जो मेमोरीज आपको याद है, सीटियां बजाई होंगी, गर्लफ्रेंड के साथ आप डेट पे गए होंगे, शेयर सम लवली ब्यूटीफुल मोमेंट्स फ्रॉम योर मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस ऑन द बिग स्क्रीन फॉर यू. सवाल तो रजत साहब के साथ नहीं, मैंने दोनों को किया है. अच्छा. लेकिन जो ज्यादा गॉसिप और मसाले के साथ आंसर करना चाहते हैं, दे कैन गो फर्स्ट. मुझे लगता है इस मंच पे सबसे ज्यादा गॉसिप और मसाला आपके पास ही है. क्योंकि आप एक तरफ गर्लफ्रेंड की भी बात करते हैं, वहीं पे महबूबा की भी बात करते हैं. मैंने कहा भाई किस 90s में पैदा हुए थे आप? तो नहीं, सिनेमा से बहुत पुराना साबका रहा है. मैं मेरी परवरिश यहीं रांची में ही हुई थी. मैं यहाँ विकास विद्यालय का स्टूडेंट हूँ. तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड संडे को, जी थैंक यू, जो जानता है विकास विद्यालय, तो हम रांची आते थे सिनेमा देखने. और हमें एक ही दिन मिलता था कि जितनी सारी फिल्में आप देख सके तो देख लें. उन दिनों पता नहीं अभी क्या है, उन दिनों रांची में मॉर्निंग शोज़ में अंग्रेज़ी फिल्में चलती थी, और वो
कुछ थिएटर्स में, प्लाजा में और मिनी सुजाता खुला था वहाँ पे, संध्या में कभी कभी, बट मिनी सुजाता एंड प्लाजा ऑलवेज हैड हॉलीवुड फिल्म्स. So all the James Bond films I've seen in Plaza, Omen I saw in Mini Sujata, Jaws I saw in Plaza. Huh? Not Jurassic Park. Jaws. Jaws I saw in 80s. Jurassic Park तक मैं किसी दूसरे पार्क में पहुंच गया था. वो बहुत हाल की फिल्म है. तो हाँ, फिल्में देखने का शौक बचपन से है. और आपने कहा कि एक मसालेदार किस्सा सुनाइए, तो हम क्या करते थे कि दिन में 4 फिल्में देखनी है, तो फिल्में देखने के लिए टिकट के लिए लाइन में भी लगना पड़ता था. सो वी यूज्ड टू गेट डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ 2, 4 each, and we'll gather at Firayalal Chowk. This is the first पड़ाव, and then we'll go in 2 different directions. अगर मैं संध्या जा रहा हूँ और बाकी के 4 लोग सुजाता जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपने फिल्म की टिकट खरीदेंगे और अगले शो की भी 4 टिकट खरीदेंगे, और हम भी अगले शो की भी 4 टिकट खरीदेंगे, और फिल्म देखने के बाद वी विल क्रॉस ईच अदर, एक्सचेंज टिकट्स एंड रन सो दैट वी डोंट मिस द फिल्म. तो हम वैसे फिल्में देखते थे. बाय द वे, हम अभी भी वैसे ही फिल्में देखते हैं. सिनेमा घर में जाके फिल्म देखने का शौक अभी भी है. वो दीवानगी, वो जुनून अभी भी है, एंड आई होप कि वो ख़त्म ना हो. Rajat sir? Like almost everybody in this country, you know, cinema watching is such a religion here that it's very hard to escape that when you're growing up. Then after you reach a certain age, you can reject or accept, continue watching it. But the growing up years, cinema is a very important part. And our father was a big film buff, so we watched a lot with him. But some of the films that I remember making a huge impact, which have stayed with me. For example, Diwar, 1974, and I was 13 years old that time. And it made a huge impact. In fact, I met Javed Saab on a flight last year, and I'd met him earlier. But this time I went up to him and I said, I've never told you this, you know, but I do want to tell you that that film has left a big impact on me, and especially this particular scene and so on. And he was very pleased. There was some magic that happened with Salim Javed's writing, with Bachchan's persona. Anyway, I suppose there's a certain age when a certain kind of film attracts you and makes an impact. I was 14 years of age that time, and that film, I think, might be the most impactful film that I watched on a screen. Like how Jurassic Park has made an impact. Sir, I have plenty of stories about cinema. As much as I can watch a Veerana Ramsey Brothers ki, I can watch a Hasina Manja ki, Govinda ki. I can also sit down and watch a Waltz with Bashir or a Shawshank Redemption. तो movies का exposure हमेशा बहुत सही रहा है. तो सर, आपने बच्चन साहब की बात की. I'm just not going off record, but before we get back to OTT, I have to share this incident. तो हमारे कलकत्ता में there's a movie hall in South Kolkata जहाँ पर हम दिखाया गया था. Everyone was very interested to see Amitabh Bachchan. जुम्मा चुम्मा दे दे गाना hit हुआ. So we all went to the movie hall. I just want to tell this generation what you're missing if you don't go to a movie hall. You know, suddenly हमें पता चला कि the screening of the movie has to be stopped. तो पीछे से एक आवाज आई, पता नहीं क्या हुआ. तो बेसिकली हुआ आलम ये था कि जब बच्चन साहब ने ऐसी अपनी जुल्फें लहराई थी, वो जुम्मा चुम्मा दे दे उस गाने के पहले, there was a gentleman from the audience जिन्होंने बच्चन साहब को गुरुदेव कह के बालकनी से वो कूद गया. It's actually a real incident. And then they stopped the screening only to get him to the hospital and then to start the movie all over again. Now, in a world of OTT cinema that we all live in, where is that excitement? आप अपने घर पे अपनों के साथ देखते हो, but I believe watching a good story. ज़्यादा सोफे से कूदोगे. ज़्यादा सोफे से कूदोगे, कुछ होने नहीं वाला है. नहीं सर, इसका भी मजा कुछ और है. इसका भी मजा कुछ और है. मिडिल क्लास हाउस होल्ड में किसी भी घर पे आप अगर अपने पापा मम्मी के साथ पुराने जमाने में जैसे VCR में कुछ देखते थे, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. सर, टाइटैनिक इज अ मूवी, आई एम टेलिंग यू द मूवी नेम आल्सो. तो हमारा VCR सर खराब हो गया था. एंड देन द मैकेनिक केम. व्हाट आर द ऑड्स ऑफ हिम VCR ठीक करने के बाद पॉजिंग एट दैट एग्जैक्ट सीन वेयर ही इज नॉट सपोज्ड टू पॉज. एंड देन माय मदर गोज टू द किचन, क्योंकि उनको याद है कि दाल तभी खराब हो जाएगी, रोटी बनानी है. माय फादर पिक्स अप द न्यूज़पेपर बिकॉज देयर वाज नो मोबाइल फोन दैट टाइम.
and it was over to me whether to watch or to skip or to pause or to forward. Now, the world of OTT cinema is very similar to that, video player or that VCR that we used to have. You can sit, pause, enjoy with your family, have these little moments. Cinema hall se nikal ke sir, OTT की दुनिया का जो vibe है, I'm sure when Netflix and Prime Video erupted on the scene, it was exciting, लेकिन also a very apprehensive time for actors and filmmakers because उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो नदी है ये किस तरह बहेगी. I'm talking about those days back then. What was your first vibe about the OTT revolution that happened in India? Or should I also put it, what are the first series that you saw and you were like, wow, ऐसा content तो यार हम cinema halls में नहीं बना सकते. This is out of the world. यार ऐसा out of the world तो अभी कुछ हुआ नहीं है. Every time a new possibility appears, so one is very optimistic because that's how one is built, to be optimistic about the future. And then pretty soon, within 3 or 4 years, that optimism fades away and that promise fades away. And I think something similar has happened with OTT already. It came with a lot of promise of supporting a certain kind of cinema or certain kind of content. But as you can see now, it is that promise has not been held true. They're making very bad stuff. And they're not supporting good cinema, I think. I agree with what Rajat is saying. See, what happens is, I remember, I think I'm probably a little earlier generation than you. When television had started making content in the big time, this used to be a very huge debate कि अरे अभी टीवी आ गया तो अभी पिक्चर कौन देखेगा, अभी तो घर पे ही देख लो यार, अभी बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर पे संडे को 4 सिनेमा आता है, आप 4 सिनेमा देख लो. But it wasn't about that, and I think what Rajat is saying is exactly what's happening with OTT. OTT came with a promise, and the promise came from somewhere else. It wasn't our promise. We started imbibing what the West, and how the West was creating content. Because lots of the Western shops have come and opened their, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं यहाँ पे. Rightly so, because we are the largest consumer in the world. But are we making great content? I doubt it. I don't think so, because and not just OTT. Why are we just singling out OTT? Even in cinema, what are we making? We claim to be the biggest film industry in the world, but you can't name 10 films in the last 20 years that you could say that is at par with world literature when it comes to cinema. So that's the sad affair we are at. And that is something that I agree and resonate with. I will say this with humility, क्योंकि filmmaking बहुत complex process होती है. हमें सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं to decide, to judge whether we like a movie or a series or not. But there's so much of hard work also that goes behind the scene from the director, the storyteller. So जब मैं, when I look at my own life, and I'm saying this very honestly, so during the 2 years of COVID, I think I saw a lot of OTT. I was spoiled for choice. I suddenly realized कि फहद फासिल नाम के एक इंसान है. I suddenly realized there's a movie like Sudani from Nigeria, Cycle in a Marathi movie. Thanks to Netflix and a Prime Video, started exploring all of this content. Then it just happened, जो एक regular इंसान के साथ होता है, I was spoiled for choice. I was spoiled for the freedom that I had to, जब मैं वो Fire Stick का remote लेता था, I had a certain freedom कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, क्या नहीं देखना चाहता हूँ. Is Bollywood slowly missing that little trick about more and more content, that's coming in? That's number one. Number two, sir, also, the question is, does OTT offer a platform for actors to reach out with their stories more? When I look at it from the positive side, like a Scam 92 is a good example, Pratik Gandhi. I would think about Jaideep Halwat as a very good example. क्योंकि वो 10 या 15 साल थे, I think, so this cinema is में. what has happened. You're right. Because of the OTT surge, there's a lot more work happening. And maybe writing quality is a little better. Maybe the characters are a little better etched out than they were for mainstream Bollywood. And yes, that is giving a lot of opportunity to many, many actors. And we have thousands of phenomenal actors who are still waiting to be discovered. So yeah, for that and for technicians, for work, it's been very good.
everybody's working, everybody's busy, and some of them have better work than they ever had in their lives. So that part, yes, I agree. I will just extend this question. Would these actors, जिनको OTT में ये platform मिला है, will that reflect on the big screen also? Will producers and directors wake up to the fact कि, oh my God, he's got such a huge fan following on OTT. He's trending on number 2, number 3. Yes, it's all happening. But I मुझे लग रहा है कि हम अपने सवाल से थोड़ा digress हो रहे हैं. कि आपने कहा कि spoiled for choices. एक्टरों की बात बहुत बाद में आती है यार. Rajat साहब is still very kind to say कि हाँ writing has improved. I am saying at least they have started writing scripts. पहले तो आइडिया होता था और वो आइडिया फिल्म में बन जाती थी. अभी चूंकि बाउंड स्क्रिप्ट लिखी जाती है क्योंकि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आ गया है कि आप वो करेंगे, वहाँ से आप एक कमिटी को देंगे, वो कमिटी में 4 लोग पढ़ेंगे जिन्होंने कभी सिनेमा ना बनाया है ना शायद बनाएंगे, और वो 4 लोग पढ़ने के बाद उसको ग्रीन लिट करेंगे, ये एक नया हरी बत्ती जलाएंगे उस पर, और तब जाके फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी. वहाँ पे लोग कहेंगे अच्छा इसमें ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस हैं और ये हैं, इस पर इतना पैसा हम कैसे लगा सकते हैं, इस एक्टर के नाम पे तो चवन नहीं देगा कोई यार, मतलब उसको इतना ही पैसा दो. तो वहाँ से भी जब वो ग्रीन और येलो लिट होके आती है तब चीज़ें बनती हैं. तो ये दूसरी, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ये कॉमन है. मेरे कहने का मतलब है कि जो सवाल आपने खड़ा किया है ना कि ये स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, वो स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा. मतलब हम बचपन में हमें सिर्फ एक कॉर्नफ्लेक्स होता था जी सीरियल के नाम पे, पूरे बाजार में एक कॉर्नफ्लेक्स मिलता था. अभी ब्रेकफास्ट सीरियल कम से कम 25 हैं, आप जाइए तो हर तरह के हैं, मूसली का भी है और चोको का भी है. आप क्या मतलब 17 सीरियल तो नहीं खाते ब्रेकफास्ट में रोज सुबह. सो यू हैव टू यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि भाई हमारे पास इतने चॉइसेस हैं, मैं जो देखूंगा उसको ब्रिलियंट होना चाहिए. दैट्स अ यूरोपियन थॉट. बट आई एम सेइंग इज कि अवेयरनेस तो बढ़ी है. ये एक अच्छी बात OTT से हुई है कि ये एक अवेयरनेस बढ़ी है कि आज जो हमारा कल का आम दर्शक था उसको शायद नहीं पता था कि अच्छा सिनेमा किसे कहते हैं. अगर वो एंटरटेन हो गया तो ठीक है. मतलब बात वही हो गई कि ये भर्त्सना नहीं हो रही है किसी की कि प्रेमचंद में और गुलशन नंदा में क्या फ़र्क है यार. गुलशन नंदा ज़्यादा पढ़ते हैं लोग और प्रेमचंद बहुत कम लोगों ने पढ़ा है. वो मार पीट के कहा कि भाई कोर्स में पढ़ना है तो आप पढ़ते हैं. लेकिन अच्छा साहित्य क्या है इसकी समझ थी, तभी भी लोगों को थी. मेरे ख्याल से OTT के आ जाने के बाद, अलग अलग तरह के कंटेंट देखने के बाद, अगर ये बूझ ही थोड़ी सी इवॉल्व हो जाए कि अच्छा सिनेमा क्या है, अच्छा कंटेंट क्या है, अच्छी लिखाई क्या है, अच्छी राइटिंग क्या है, तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ. I completely agree because just as Rajat sir said कि जब OTT made its debut तो काफी promise था. आपको लग रहा था कि जो आपको सिनेमा हॉल्स में नहीं मिलेगा, you get in the comfort of your drawing room, आपको कुछ नया कंटेंट मिलेगा. But now when you look at the content, it's either a remake or it's the same Bollywood style formula that's been used. एक certain actor, एक certain किरदार में, certain documentary में, certain storyline में, he fits into that formula and they keep doing it again and again. Here's a very interesting question that I have. हम हमेशा कंटेंट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो OTT पर हो या सिनेमा हॉल पर. How would you define great content and good content? What is the difference between the two? Great content is rare. Could a good couple of examples? I think what is, first of all, in cinema, because that's the one thing I know a little about, I think a great film would be for me first, which has a unique voice. Which is when you see 5 minutes of that film, it is this filmmaker. When you see a Scorsese film, it can't be anybody else. When you see a Christopher Nolan film, it is that guy. When you see Kurosawa, it's Kurosawa. It can't be a mistake. And they're very different universes from each other, And so is Chaplin, and so is Fellini, and so is Bresson. They're all very different filmmakers, but each one has they create their own universe. And that universe is authentic. So it is still a reflection on our universe, but it is very much their personal universe. And I think for any art, the first criteria for moving towards greatness is that you have to have a very strong,
individual, unique voice that nobody else has. Sir, your take? Yeah, same thing. I mean, extending from what he's saying, when you see a Bimal Roy film, you know it's a Bimal Roy film. चाहे वो मधुमती हो या बंदनी हो. When you see a K. Asif film, you know, I'm not saying that they have made the greatest films, but I'm saying that uniqueness of storytelling, that you know, that sucks you in. आप प्रेमचंद पढ़ना शुरू करते हैं तो आप तुरंत उनकी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो आपके इर्द गिर्द आसपास एक ऐसी दुनिया खींच देते हैं जिससे आप बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कहानी खत्म नहीं होती है. तो बात उसकी है. बात ये नहीं कि ग्रेट कहानी में इतना ग्रेटनेस है कि हम बहुत कुछ सीख लिए. बात वो नहीं है. बात है कि आपकी कहानी में, कहानी कहने के लहजे में कितनी बात है, कितनी ओरिजिनलिटी है ना, और कितनी परिपक्वता है आपके अपने विजन की. वो मतलब इट्स नॉट एन एक्सीडेंट when a great filmmaker or a great writer or a great artist or a musician when they create their art, it's because they work towards it, you know, and they've been working at it for years. So it's a result of that labor. Abhi, there is this new tendency that we all have. Let's all be very honest with it. जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है, a typical, you know, audience, what would we do? हम सबसे पहले थोड़ा सोशल मीडिया पर रिव्यू देख लेते हैं कि भाई 10 में से कितने नंबर है, 9, 8, 7. देन वी गूगल आउट द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इसका नेक्स्ट रिलीज कब होगा OTT पर. तो 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, चलो हम वेट करेंगे. उसके बाद विल डिसाइड whether we go to the movie hall or not. It's a very honest experience that we have. This little habit that we have got into, कि अब हमें मूवी हॉल नहीं जाना है. Movies will come on OTT. It's very sad, especially for people like us who make small independent films. So it will not impact so much a big scale, what is called a tentpole film. People will still go and want to watch it in a cinema hall. But for smaller films, unfortunately, in the last 4 years, this is what has happened, that people want to watch it for free. We love independent cinema. We love your film, sir. When is it coming on YouTube? You know, we won't pay for it. Sir, that's a very honest thing. Even I've always wanted to ask. हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी कहानियाँ चाहिए. But when we have good stories coming out, we just don't want to pay and go to a movie hall and then watch and then encourage more content. It's not just money, you know. It's not just money, but now, as you rightly said earlier, there is such a huge surplus of choices. There's so much happening. Every week there are some 6 things releasing, 5 in cinema hall and 4 on OTT. So every week there's 10 things releasing. How do you make time to watch anything? It's become very difficult. You're right. So yeah, unfortunately, we say, okay, you postpone it, maybe I'll watch it later, after 6 months, if the reviews are good, if the recommendation is good, if it comes on YouTube, and so on. So we go very down on priority list, you know. Because times have changed, let's face it. You know, if we keep dreaming about that it should become the way it was when we were kids, that nostalgia never reaches any destination. So it will remain a nostalgia. लेकिन अभी within this chaos, within this mayhem of, जैसा कि इन्होंने कहा कि हर हफ्ते 10 नई चीज़ें आ रही हैं और by the time you get done with it, आप और भी तो काम है, आप दिन भर मतलब बैठ के सुबह शाम वही तो नहीं करेंगे. So yes, you have to select and pick and choose what is it that you want to indulge into. I know some of my friends, they're so heavily into documentaries. वो fiction देखते ही नहीं है. तो वही बात होगी कि भाई आप किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं और कौन सी तरह की किताब आपको पसंद आती है. कोई नॉन फिक्शन पढ़ता है, कोई फिक्शन पढ़ता है. तो consumerism is at its peak. So at least the consumer, the audience, they have, you know, the power to decide. लेकिन बात वही हो गई है कि अरे नहीं यार, ये तो मतलब घर पे मम्मी बना देंगे यार, ये लिट्टी चोखा खाने हम बाहर क्यों जाएंगे, घर ही पे बनता है वही खाएंगे. बाहर में चल के ना पिज़्ज़ा खाते हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं बनाता पिज़्ज़ा. अब चाहे पिज़्ज़ा कितना भी भलता सा क्यों ना हो, हम खाएंगे बाहर, उसके लिए पैसे कितने भी खर्च हम करेंगे. मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे एस्पिरेशंस भी ना फिल्मों के और अच्छे साहित्य के और अच्छी फिल्मों के अलग अलग हैं. जो गाना पिछले 1.5 महीने से चल रहा है आपके टीवी पे प्रमोशन में, उस गाने को ही देखने आप उस सिनेमा के लिए जाएंगे जब पिक्चर रिलीज होती है.
तो वो that pop culture is something that you can't do anything about. And yet, I do have a firm belief कि अच्छी कहानियाँ and अच्छी stories will always survive. कल जावेद साहब made a very interesting point और बहुत अच्छा point उन्होंने कहा कि this entire generation is so fast paced. तो when you look back, it's actually true. अब vegetable चाहिए तो 10 मिनट में आता है. आपको पता है कि आपने जब कैब बुक किया है वो बंदा मैप को दिख रहा है कि it's coming in 5-6 minutes. Yet you will give him 500 calls in 5-6 minutes. भैया किधर हैं? भैया किधर हैं? भैया किधर हैं? I've been noticing this pattern, especially with youngsters. मैं अपनी family की बात कर रहा हूँ, and I'll be very honest, my niece has been staying with me for 6 months, and every time I sit down to watch a movie, उसका सबसे पहला सवाल होता है, I see her so impatient in front of that, मामा story बताओ, what is the story? अच्छा क्या है? 3 मिनट और 4 मिनट, and then she just walks off, decides. Very similar to what Javed said कि कोई किताब लेते हैं तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है. The taste of the audience is also changing. How challenging is it now as a filmmaker? More so Rajat sir ki that attention span, hum chahe na chahe, we can't fight this. It's also reducing quite a lot. So how do we grab that attention with very good content, be it OTT or be it movie halls? And we have to embrace this technology, and we are not negating about it. But the fact is कि कहीं ना कहीं वो attention span कम हो चुका है. Just छोटी सी example, because I play retro songs on my show. तो कदर करने का हुनर है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है. Now I don't have, this generation probably doesn't have time to understand a song or a story. That is not true, yeah. This is not true. I don't think generational change is such a big thing. There is an attention deficit for sure, because again there is too many things asking for your attention. You're on your mobile phone all the time, as I can see many people there. So yes, there is an attention deficit, but cinema is something that unfolds in time, right? If it's a 90-minute film or a 180-minute film, it still unfolds in time. Every second takes your story further. Your camera moves, your editing moves the film, your story moves the film, and so that's a journey that is unfolding in time. You can't escape that. You can't capture that experience in 30 seconds. It has to be 90 minutes, right? So, and I think it's not that people have stopped reading. I don't believe it. I don't believe it. People read. People watch films. So it's they choose. How can they watch a series after series which goes on for 8 hours? People are watching it, right? So what attention deficit are we talking about? People have time. People now. It is just that they want to watch this or that. That is another matter. But people are willing to invest their time if they're engaged by it, like Vinay said. That is the primary thing. You have to engage the audience, whether it's a book or a film or anything. Godfather is 3 hours long. It's such a slow film. It's cut like an art film. You never say, "Arey bore ho gaya yaar." You never say that. You're engaged. Because you're engaged with the characters and the story and so on. And I don't think it's right to blame the new generation. I sincerely believe that the younger generation, they are much more evolved than we had ever been. वो अपनी मार्वल वाली फिल्म देखते हैं यार, 3.5 घंटे की फिल्म, उनको नहीं होती परेशानी. Yeah, all that franchise, they don't get bored. So that means you are sitting and watching a film that is like boring to begin with, तो आपकी नीज तो पूछेगी ना कि भाई पहले कहानी बताओ, मुझे 2 घंटे बिठाओगे यहाँ पे. Then I will, waste my 2 hours with you because you are enamored by something. कि नहीं ये तो इन्होंने सन 47 में अच्छी फिल्म बनाई थी तो अभी भी अच्छी फिल्म ही बनाई होगी इन्होंने, वही देखते हैं. So no, I think the younger generation has a different radar, of course. We don't understand that radar, so time and again we say कि भाई नई पीढ़ी के लोगों को समझ नहीं है यार. ये मुझे लगता है हमें समझ नहीं है नई पीढ़ी के लोगों को समझने की, वो हमें समझ हासिल करनी पड़ेगी. Absolutely. I had to put this question in perspective of someone young watching this also. In recent times, Kala is a good example. जो OTT पर उसका release हुआ, there are filmmakers जो opt कर रहे हैं कि उनका digital release होगा, and they are not going for the movie halls. I was
मोनिका ओ माय डार्लिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आई लव दैट मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. Again, the thought that crossed my mind was अगर ये movie hall में release होता, what's wrong? And people would have still gone and watched this content because this is such a fantastic story. Then there is an eternal debate जो अभी चल रहा है और कि साउथ की फिल्में बहुत अच्छी कर रही है. They are still making money and they're making that commercial success. Who's going right and who's going wrong? Because there are people flocking to the movie halls and there are still people preferring to watch movies in the comfort of the drawing rooms. There's a film that Woody Allen made. It's called Whatever Works. Whatever Works. जैसी जिसकी श्रद्धा, देखिए. और हम ये बात भूल जाते हैं कि फिल्म बना के देखिए एज एन ऑडियंस कि आप कह रहे हैं कि नहीं अगर ये आती ना थिएटर में तो मैं थिएटर में देख लेता, और ये थिएटर में देखने जा रहे कि अरे यार थिएटर में देखने क्यों आया यार, ये ओटीटी पे आ जाती वहीं देख लेता मैं. ठीक है, तो ये तो असमंजस आप अपने दर्शकों की कर रहे हैं. ये बात हम भूल रहे हैं कि अब जो फिल्में बनाने का जो भी है जो प्रोसेस, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म, लेट्स फेस इट. तो जो भी पैसे लगा रहा है वो अपने अनुसार कह रहा है कि भाई देखो क्या है कि ये जो किताब है ना इसकी सिर्फ 50% आप कीजिए और उसको सिर्फ स्टेशन पे ना, हर रेलवे स्टेशन पे हम डाल देंगे. वहाँ पे जो होते हैं ना स्टेशन पे किताब बेचने वाले, वहाँ पे अगर बिक गई तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइब्रेरी में भेज देंगे. हाँ 8-10 स्कूलों से बात कर लेते हैं और ये किताब वहाँ पे चली जाएगी, ख़त्म होगी बात. ठीक है, क्योंकि हमने इतने लागत में पैसे लगाए थे और इतना तो हमारा आ जाएगा. अब है कि नहीं, एक काम करो ना, आप इसके 5000 प्रतियाँ छपवाइए और देखिए बाजार से उठती है कि नहीं. अब कुछ लोग जले हुए हैं शायद, उनकी प्रतियाँ अभी भी बाजार में तैर रही है, किसी ने नहीं उठाई. तो वो हमें समझ में नहीं आएगा. नहीं तो हम भी बाजार में होते, हम भी प्रोड्यूस कर रहे होते या हम भी रिलीज कर रहे होते. तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या चक्कर क्या है कि आप ओटीटी में चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं इसको पहले रिलीज करेंगे फिर ओटीटी में लेके जाएंगे, या आप कहते हैं कि नहीं आपका तो पढ़ा था मैंने कि आपका ओटीटी में ऑलरेडी इतने का डील हो चुका है और इसके बाद आप फिर से रिलीज कर रहे हैं, तो करेंगे भाई हम इधर से भी खाएंगे हम उधर से भी खाएंगे. तो यही है कि मतलब शुद्ध घी तो आ जाएगा गांव के ग्वाले से और वनस्पति खरीदने के लिए आपको लाइन लगनी पड़ेगी. तो मैं बात उसकी भी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक चीज की भर्त्सना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो जो व्यवसाय है वो व्यवसाय की बात है. तो उसका मतलब इज दैट अ क्रिएटिव डिसीजन? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. इज दैट अ डिसीजन दैट्स लेफ्ट ऑन अ डायरेक्टर? आई डोंट थिंक सो. कि भाई आप डायरेक्टर हैं, आप ये बताइए कि आप अपनी फिल्म को थिएटर में चाहते हैं या ओटीटी में चाहते हैं. Director doesn't have usually much say into the release of the film because these days release of the film is very expensive. कि आप इसका कितना प्रमोशन करते हैं, कितने लोगों को बताते हैं, इतनी सारी जनता है, सबको बताने में कि ये फिल्म फलां तारीख को अमुक सिनेमा घरों में आ रही है, आप देखेंगे कि नहीं, और इसको इसलिए देखेंगे क्योंकि इसमें इस तरह के रोचक चीज़ें हैं. तो ये बनाना भी, ये फिल्म बनाने जितना ही महंगा है, तो मतलब वो तो उस व्यापारी से पूछे ना जो एक प्रोडक्ट बना के उसको कैसे बहुत लोगों तक पहुंचाए और कम से कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पाए. ये तो उसकी बात है, ये एक्टर और डायरेक्टर के हाथ में नहीं है ये बात. You know, the very fact कि OTT will it kill or revive the cinematic experience, I think ये तो बड़ा वो never ending debates है. Both of them are good in their own ways. हमें दोनों अच्छे लगते हैं जहाँ पर हमें कहानी अच्छी देखने को मिलती है. As long as I like to believe that a filmmaker जब वो storytelling का process शुरू करते हैं तो बड़ी मेहनत होती है, and till the time that it reaches your television or your laptop or your mobile phone, wherever you're watching it from, it's an experience for you to absorb what the filmmaker is trying to tell you, that story, as long as it reaches a part of your conscience as well. तो सर थोड़ा लाइट सवाल आप दोनों से, और ये मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा. When I think about movie halls, those were the first places हम हमेशा डेटिंग किया करते थे. मतलब और कोई जगह जाने की होती नहीं थी, तो हमें कहा जाता था कि तुम जाओ go for a date in a movie hall rather than have a cup of coffee, which is a modern trend these days. So have you ever been out on a date? भाई मैं मूवी हॉल, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ. हमसे ऐसे नाहक सवाल ना किया कीजिए. बट यस, व्हेन वी ग्रू ओल्डर, जब हम बड़े हो गए और डेट कार्ड समझ लेंगे, तो हाँ दोस्तों के साथ हम फिल्म देखने अभी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है.
बट जो आप कह रहे हैं कि सिनेमा घर के अंधकार में आपको ये, क्योंकि इनका सवाल वहाँ पे था, ये आपका सवाल जो था वो बहुत ही वो टिटिलेशन की तरफ, इट वाज ऑलमोस्ट। तो भाई आप कलकत्ते से हैं, कलकत्ता में बहुत स्वतंत्रता है इन सब चीज़ों की, मतलब एक्सप्रेशन की आज़ादी है, हर तरह की बात है। तो आप यू हैव बीन लकी। आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, व्हाट डू आई नो यार। So to my knowledge, I've always entered a movie hall trying to watch a movie only. But yeah, it's just a movie hall evokes so many good memories in you, ना कुछ funny, nostalgic और काफी ऐसे emotional memories आ जाते हैं. That it does. But mine consist of trying to figure out कि टिकट कहाँ से मिलेगी और कौन दौड़ के समोसे लेके आ जाएगा इंटरवल में, उस तरह की चीज़ें हमें उस समय परेशान करती थी। आपकी दुनिया ही दूसरी रही है। सर एक और चीज जो हम सब करते थे कि हम जब मूवी हॉल जाते थे उन दिनों, तो वी नेवर यूज टू मेक मनी, तो हम इंतजार करते थे उस एक दोस्त का जो पॉपकॉर्न स्पॉन्सर करेगा, कि भाई अगर मूवी जानी है तो यू विल स्पॉन्सर दैट पॉपकॉर्न फॉर अस। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू रजत सर, ये सिर्फ आपके लिए। when we met in the studios also, मैंने रजत सर से कहा आपका बड़ा वो इंटेलेक्चुअल सा वाइब है, सो आई एम गोना आस्क यू अ वेरी फन लाइट हार्टेड क्वेश्चन। हमने किया है और हमने दिल से कहते हैं कि हमने किया है, ट्यूशन के पैसे जो मम्मी देती थी उसको बचाकर हम कहते थे मम्मी हमने ट्यूशन सर को दे दिया, क्लास नहीं करते थे और जाकर एक मूवी हम जरूर देखा करते। सो how did you do anything like this to, I mean, to go to this extent, वो दीवानगी वो नशा, just to चलो ये मूवी हमें देखनी है? अरे I've done worse. सर कुछ किस्से? I don't think I've ever told this to anybody. बट क्या हुआ, एक हमारे दिल्ली में यूनिवर्सिटी के पीछे एक बत्रा हॉल खोला था रिसेंटली। तो बत्रा हॉल पे पता नहीं कौन सी पिक्चर लगी थी, तो हम लोगों ने सबके 6 टिकट खरीदे और 6 में से 2 लोग नहीं आए, 4 लोग थे हम, 2 टिकट बच गए और हाउसफुल था। तो 8 रुपए के टिकट थे, मैंने 12 के बेच दिए। फिर मुझे लगा यार ये तो अच्छा काम है यार और फिर हर हफ्ते जाके हम लोगों ने थोड़ा ऐसा 4 की जगह 6 टिकट खरीद के 2 टिकट जो है 50% पे, टिल कुर्बानी हैपन फिरोज खान की शीला सिनेमा पे, और वहां पुलिस वाले ने पकड़ लिया मुझे। दैट वाज द लास्ट टाइम। This is explosive stuff. Shall we open to the audience? Yes, we are. I'll just open it to the audience here, or yeah. See a lot of new faces behind. Yes, the girls there. Yeah, please. Yeah, the one with the mask. Can you just pass the mic? काफी नए चेहरे, so let's have a good round of questions. Thank you. It was really nice listening to the conversation. This is not specific to OTT and films, because I think I don't understand how the behind the scene works, but thank you so much for letting us into that universe. I think like what I struggle with currently, as you rightly said, there is a lot of choice. I think there's a lot of noise also. Whenever there is some release that happens, there is a lot of talk. So the space or the pace to be able to make your own choice or to be able to have your own opinion about a piece of art is limited. So personally what I'm doing is I take my time. I don't immediately watch what is being released. However, I also know that that has an impact. That goes into the popularity conversation, that this is not something which is popular. So my question is, like the idea of like film clubs, book clubs being more intentional, being more inclusive, how do we go about doing something like that? Especially in a city like Ranchi, which is also being seen as what do you call that, smart city. And the other thing that I wanted to ask was, I think I'm forgetting what I was trying to ask, but no, I think I'm forgetting, but I'll just like leave it at that. What an interesting observation, and what a lovely question. This thing about noise is absolutely correct, you know. I don't watch anything at all, actually. There's very rare, maybe 3 things in a year I watch. Because if it is between crap and more crap, how do you choose, first of all, you know? There are really hardly, I think, in my humble opinion, there are 4, 5, 6 good things in the whole year to watch. And I don't mean only here, I mean Hollywood and here. And
the way Hollywood is behaving is terrible. I mean, they've not turned out two good films in last 2 years. It's terrible. They're only making superhero films. That's it. They've stopped making cinema, you know, by and large. So there's a Scorsese and Nolan and Coen brothers, and that's it. Beyond that, the system is not allowing them to make anything else except this. And you're right, everything that comes with such great noise, they think, oh my God, this is going to be earth-shattering. And I think a good test would be to watch 5 minutes. You know, give it a taste. If 5 minutes means something to you, if it's attractive to you, if it engages you, then you'll continue. Otherwise, you drop out. You know. I agree to what Rajat is saying, but Rajat, I'm glad you said what you said. I also think in the last 10-15 years, we as a film industry, we have learned how to cut great trailers, yaar, Rajat. That is so true. Okay, so if trailers have to be the scale, तो फिर तो आप मतलब 90% चीजें आप देखेंगे कि नहीं ये इसका ट्रेलर तो बहुत ही कमाल था. And then there are certain trailers, of course, they tell you what the whole film is about, and you get put off. So how, I mean, again, it's always a struggle, you know, what to watch, and then as rightly so you said, you wait. I also do the same thing. As a matter of fact, please don't be mad at me. For entertainment, I watch cricket matches, yeah. You know, they have more drama to it than an original drama happening live right in front of you. Yeah, and no, news channels are very, you know, वहाँ पे मेरा पेट खराब हो जाता है जी. और वो फिर entertainment किसी और का हो जाता है वो news channels. I could almost predict the script before they start to script. So no, they're very boring actually. I'm sorry, but I'm sure somebody is related with news channels somewhere. They're the most atrocious, most boring, despicable thing you could ever watch on television. And I'm saying that about myself. But you know, people watch porn. So, you know, who am I to, you know, it's your choice, whatever you want to watch. But as you rightly said, मैं भी रांची से हूँ और मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि हमारे रांची में क्यों नहीं है एक फिल्म क्लब. हमारे रांची से क्यों नहीं, मतलब छोटे शहरों से बहुत चीज़ें निकलती हैं. भोपाल में अभी भी थिएटर बहुत सक्रिय रूप से होता है, इंदौर में थिएटर होता है सक्रिय रूप से. मैं रांची से हूँ, यहाँ से थिएटर नहीं होता. मैं यहाँ जब से मैं थिएटर एक्टर बना हूँ, जीवन में दूसरी बार मैं आया हूँ अपना नाटक लेके, और मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी साल में कम से कम 3-4 बार रांची आऊँ और रांची के दर्शकों के सामने, क्योंकि मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट था तो मुझे भी मन करता था नाटक देखने का, और उस समय रोष होता था उन सारे फर्स्ट बिग सिटी पीपल. मुझे लगता था वो कितने लकी हैं कि वो जब चाहें वो जाके नाटक देख सकते हैं. मुंबई में जो लोग रहते थे कि अरे यार वो पृथ्वी पे जाके अमजद खान का नाटक देख सकते हैं जो किसी सिनेमाघरों में नहीं आता है, तो हम सिर्फ पत्रिकाओं में पढ़ते थे या न्यूज़ में पढ़ते थे. तो मुझे लगता है कि अभी भी इतना स्मार्ट सिटी होने के बाद कुछ चीज़ें बदली नहीं हैं. तो that's why a platform like this, and I have to thank Malvika for this, a lit fest in Ranchi, where you see that there's so many intelligent people, eager people, and people waiting, you know, in the wings to do something, watch something, learn something, read something, and create something new. And it's not that, you know, we have dearth of talent, it's just that we don't have opportunities. I completely agree with both of them. Lovely question. बिल्कुल सही. हम तो हर साल वही देख रहे हैं कि एलियन आ रहा है, किसी कंट्री को बर्बाद कर रहा है, संसार बर्बाद हो जाएगी, फिर कोई मरता है, फिर जिंदा हो जाता है. एंड फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, बिकॉज दे फॉल शॉर्ट ऑफ देयर ओन हीरोज एंड दे मेड ऑल दैट मनी, दे हैव आल्सो ब्रॉट शक्तिमान एंड सेड मार्वल अभी शक्तिमान रिलीज करेगा इंडिया में. एंड अगला सवाल वी विल हेल्प देम मेक दैट 100 crores आल्सो. या वन मोर क्वेश्चन इन द बैक हियर. A gentleman was raising his hand for quite some time. Yes, sir. I would like to introduce myself as Shastri. ये टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट है. इट इज़ लिटरली इसका राह देखता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं फिल्म का प्रेमी हूँ. आई डोंट नो अबाउट OTT एक्सेट्रा. आई हैव सीन लास्ट टाइम कोई मूवी देखा था, रांची का वासी हूँ और हॉल में देखा हूँ. आज भी आई लव मूवीज़. घर पे होता है, बच्चे होते हैं, सब बोलते हैं OTT देखेंगे, बट आई डिडंट सी.
So what Samari said कि मैं जब देखा इसका जो itinerary देखा, I just chosen the film one because I am a film buff. और आज भी हम चाहते हैं कि बहुत controversy है film और OTT में, but still film is film. That's what I want to say. Okay, and thank you for organizing this literary meet so that एक होता है हम रांची वासियों को एक literary food मिलता है. Thank you, Tata Steel. Thank you so much. One question more. Yeah. We have a full house, a lot of people. Okay. I'll allow space for 2 more questions in that case. Yeah, just one more please in that case. Yeah. I'll go this side. हाँ, इस तरफ. Yes. Yes, sir. Up. Okay. Thank you. I've got a question about the space in which movies and entertainment are consumed. Because when we're talking about the difference between a movie hall and OTT, we're talking about a movement from a collective space to an individual space. How much does that affect the kind of entertainment we're getting? Amar Akbar Antony depended on a space in which Muslims, Hindus, and Christians would be sitting side by side with each other. Are you going to get a film like that when a film is being delivered simply to someone in the boutique space of their own drawing room? Well, Kashmir Files did well. Toba, I rest my case. So basically, that's what the debate had been about, that what happened to the community experience, and is the personal, intimate experience, is it going to kill the community experience? That's what initially this debate was supposed to be about, but then of course we all got into, you know, our own fantasies. But I still feel that cinema is not going to die so easily. I have been kind of cinema buff, like the gentleman said. मुझे कोई परेशानी है, मैं कहीं भी पिक्चर देख लूँगा भाई, आप मुझे बस के पीछे दिखा दो, मैं वहाँ भी देख लूँगा. Because I also love watching films, and as long as we like to, you know. But not as much as cricket. Yeah. Thank you so much. Thank you. Running Thank you, short of everybody. time. Thank you so much, and we have a wonderful performance in the evening also. Ji. Do not miss it. Thank you so much. It's been an absolute honor. Thank you.